Today we will start the chapter constructors and destructors in C++. Okay. Now, in the previous chapter, that is classes and objects, we have written quite a many programs using classes and objects. Okay. Now, suppose we take an example of complex class. Suppose we have already developed a complex class and we have use the written a program to use that is compo. Suppose हमने इस तरह से कुछ ये पूरा class बना ली, complete कर ली, and then what I have done is main के अंदर मैंने इस class का एक object बनाया. Okay, so I have just created an object of this complex class in main, and suppose उस object का नाम रखा मैंने C1. So an object of the complex class C1 will be created and the required amount of memory will be allotted to C1 object. ठीक है. Now ये program आप कर चुके हो. Complex class में you have two parts, the real part and the imaginary part. And if you're taking both the real and imaginary part as float, so 4 bytes are allotted for real and 4 for the imaginary part. So in all, जो C1 object है, that will be allotted total bytes, total 8 bytes of memory. Okay, suppose ये आपका C1 object है, so this will be allotted 4 bytes for real part and 4 bytes for imaginary part. ठीक है, तो that means total 8 object को 8 bytes of memory allot होगी. ठीक. अब suppose मैं नॉर्मली हम क्या करते हैं कि गेट डेटा फंक्शन को पहले कॉल करते हैं C1 के थ्रू. सो वी इनपुट द कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम द यूजर, वी इनपुट द वैल्यूज फ्रॉम द यूजर. सपोज अगर मैं ना करूं, मैं गेट डेटा फंक्शन को कॉल ना करूं, एंड इफ आई राइट C1 डॉट शो डेटा, व्हाट आउटपुट विल यू एक्सपेक्ट? मैंने वैल्यूज तो इनपुट कराई नहीं real and imaginary part की, and I have just called the show data function directly. Now two things may happen. या तो ये होगा कि प्रोग्राम एरर देगा, तो एरर तो कोई भी नहीं है. आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और आप ऑब्जेक्ट की मदद से एक क्लास के कोई भी फंक्शन को कॉल कर सकते हो. सो यू कैन कॉल द शो डेटा फंक्शन. नाउ जब आप शो डेटा फंक्शन को कॉल करोगे तो शो डेटा फंक्शन में एक्चुअली करा क्या रहे हो? You're just printing the complex number in the complex number format, that is a plus ib format में complex number को print करा रहे हो show data के अंदर. Okay, या where a is the real part and b is the imaginary part. अब हमने values तो यूजर से इनपुट कराई ही नहीं रियल एंड इमेजिनरी की, तो क्या होगा? रियल एंड इमेजिनरी में जंक वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी. जंक वैल्यूज मींस कि गार्बेज वैल्यूज विल बी देयर, एंड व्हेन यू विल प्रिंट शो, व्हेन यू विल कॉल द शो डेटा फंक्शन डायरेक्टली विदाउट कॉलिंग गेट डेटा, तो क्या होगा? आपका कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्प्ले तो होगा, लेकिन इट विल प्रिंट सम गार्बेज वैल्यूज. गार्बेज वैल्यूज इन अ सेंस कि वो वैल्यू आपने कभी दी नहीं है, वो अपने आप से कोई वैल्यू प्रिंट कर देगा, एंड दैट विल बी सम एब्सर्ड वैल्यूज. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसे हमने गेट डेटा फंक्शन को तो कॉल किया ही नहीं. रियल एंड इमेजिनरी को जो मेमोरी अलॉट हुई थी, उस मेमोरी लोकेशन पे जो भी पहले से डेटा पड़ा हुआ था, दैट विल बी रेफर्ड टू एंड इट विल बी प्रिंटेड आउट, एंड दैट विल बी अ गार्बेज वैल्यू एज पर आवर प्रोग्राम. ठीक है, तो ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसे ना तो मैंने गेट डेटा फंक्शन कराया यूजर से वैल्यू इनपुट कराने के लिए, और ना ही रियल एंड इमेजिनरी वैल्यू इनिशियलाइज करा, सो दैट दे मे अज्यूम अ जीरो वैल्यू इफ दे आर नॉट इनपुट बाय द यूजर. आप एक नॉर्मल वेरिएबल के लिए भी करते हो. सपोज मैंने एक वेरिएबल लिया a, आई हैव डिक्लेयर्ड अ वेरिएबल a ऑफ इंटीजर टाइप, एंड डायरेक्टली मैं इसको प्रिंट करके देखता हूँ. तो सपोज हम इसको वैल्यू को प्रिंट करेंगे तो क्या होगा? I haven't input the value of a, I haven't initialized the value of a, and directly I am trying to print the value of a. So
in this case also a जो print होगी, a की जो भी value print होगी, that will be a garbage value because the value of a is neither input from the user and neither we have initialized it. ठीक है, तो this is not something that should happen. कभी भी आप अगर वैल्यू इनपुट कराना भूल जाओ किसी वेरिएबल को और आप उसको डिस्प्ले करा दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ गार्बेज वैल्यू प्रिंट हो या कुछ एब्सर्ड रिजल्ट्स आए. इंस्टेड क्या होना चाहिए, सम डिफॉल्ट वैल्यू शुड बी प्रिंटेड. मे बी एक को अगर आप इनिशियलाइज नहीं किया है या आपने ए को यूजर से इनपुट नहीं कराया है, तो ए की वैल्यू अगर 0 प्रिंट हो, दैट इज मेकिंग सेंस. ओके, कि आपने वैल्यू इनपुट नहीं कराई है तो बाय डिफॉल्ट उसने 0 अज्यूम कर ली वैल्यू. बट जो भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो अपने आप से दे डोंट अज्यूम अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑन देयर ओन. So this is problem with normal variables also, and the same problem exists with the data members of an object also. ठीक है, तो अब इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, हम क्या करते थे, say I have written int a is equal to 0 means अब इस लाइन में मैं क्या कर रही हूँ, I am declaring a variable and उसी समय मैं उसको एक 0 वैल्यू असाइन कर रही हूँ. ठीक है, now this is known as initialization. जब आप डिक्लेरेशन के समय ही किसी वेरिएबल को एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर देते हो, दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल. नाउ इसे करने से ये होगा कि सपोज आपने ए की वैल्यू को इनपुट नहीं भी कराया है तो भी आपकी ए की वैल्यू गार्बेज ना प्रिंट होके द वैल्यू प्रिंटेड विल बी एटलीस्ट 0. ओके, now the same thing can be applied on objects also. ये तो हम बात कर रहे थे नॉर्मल कोई भी वेरिएबल जो होते हैं C++ में, instead of printing some garbage value they should print some sensible values, some default values, like integers may be initialized to 0 and maybe characters should be initialized to a null character and float should be initialized to 0.0 and so on. So now constructors are used for initializing an object. So why we are learning this chapter, constructors are we will create constructors for a class and constructors का काम क्या होता है, they initialize an object. They are special functions of a class and they are meant for initializing an object. ठीक है, so a constructor is a special type of member function for automatic initialization of an object. Whenever an object is created, the constructor will be executed automatically. Means अभी हम जब लिखते हैं complex से C1, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज हो रही है इस लाइन के लिखने से, only the required amount of memory is allocated to C1 object. बस और कुछ. Okay, but once we'll write the constructors for the class, then whenever we create an object, तो object को memory allot होते ही साथ automatically the constructor function will be executed and it will initialize the object, and so that it will not assume any garbage value like it was doing earlier. ठीक है, तो now so constructor is a special type of member function. मतलब कि कंस्ट्रक्टर भी एक क्लास का मेंबर फंक्शन है. जैसे हमने अभी गेट डेटा बनाया, शो डेटा बनाए, कैलकुलेट फंक्शन बनाया किसी क्लास में, ये सारे फंक्शंस मेंबर फंक्शंस होते हैं क्लास के. दे आर अ पार्ट ऑफ द क्लास. ओके, सो सिमिलरली जो कंस्ट्रक्टर्स बनाएंगे हम, कंस्ट्रक्टर्स आर नथिंग बट दे आर स्पेशल मेमोरी, दे आर स्पेशल मेंबर फंक्शंस ऑफ द क्लास. And why they are special? Because they automatically initialize an object. Automatically means कि हमें उसको कॉल नहीं करना पड़ता है. नॉर्मली कोई भी मेंबर फंक्शन को हमें कॉल करना पड़ता है. If we want to call the get data function, we have to write say c1 dot get data. जब हम ये लिखेंगे लाइन तब ही get data function कॉल होगा, अपने आप से get data function नहीं कॉल होगा. Same is the case with show data and other member functions of the class. They have to be called explicitly. They can't get called automatically. But
how a constructor function is different from the other member functions of a class. A constructor function need not be called. It gets called automatically या implicitly, अपने आप से वो कॉल हो जाता है, उसे कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है. और कब कॉल होता है? जैसे ही उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, ऑटोमेटिकली दैट कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ द क्लास इज कॉल्ड. और कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम क्या है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन का काम है ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को या क्लास के डेटा मेंबर्स को, ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करना कंस्ट्रक्टर का काम है. ठीक है. नाउ देयर आर characteristics of a constructor function. So the first, whenever you are asked to explain about what is a constructor and what are the features of a constructor, तो सबसे पहले तो आपको बताना पड़ेगा कि constructor is a special type of member function of a class which is called automatically and it is used for initialization of the object. ठीक है. Now since this function is called automatically, तो इस function को हम कोई भी नाम नहीं दे सकते. We can't keep any random name to the constructor function. The name of the constructor function must be same as the name of the class. Means अगर complex class का constructor function है तो उसका नाम क्या होगा? Complex. अगर distance class का constructor function है तो distance. अगर student का constructor function है तो उसका नाम होगा student. That means the name of the constructor function is fixed and that is the name of the class itself. You can't give it a name x y z p q r a b c. कोई भी आप random नाम नहीं दे सकते हो constructor function को, क्योंकि से अगर आप अपने तरफ से कोई नाम असाइन करने लगे फंक्शन को, तो how will the compiler know कि आपने किस नाम, कौन सा फंक्शन आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, आपने किस नाम से कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया है. सो द कंपाइलर विल नॉट बी एबल टू कॉल दैट फंक्शन ऑटोमेटिकली. तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम मतलब इज सेम एज द नेम ऑफ द क्लास, सो दैट द कंपाइलर नोज दैट कोई भी मेंबर फंक्शन जिसका नाम क्लास के नाम जैसा है तो वो क्या है? कंस्ट्रक्टर फंक्शन है. एंड जैसे ही क्लास का कोई ऑब्जेक्ट create होगा, that function with the same name as that of the class will be called automatically. So the second feature of a constructor is the name of the constructor is constructor function is same as the name of the class. पहला characteristic क्या था? A constructor is a special type of member function of a class which gets called automatically whenever an object of a class is created. And the second is the name of the constructor is same as the name of the class, which helps the compiler in calling it automatically. Okay. Now, a constructor, the third feature is a constructor does not return any value. अभी तक normally हम कोई भी function बनाते थे तो function may return a value, और अगर कोई function कुछ भी नहीं return कर रहा है, जैसे हमने get data को define किया था, तो get data function was not returning anything. So we had defined the get data function as void get data. Means get data function का return type है and that is void. Void means nothing. But constructor functions का there's no return type, not even void. So a constructor function doesn't have any return type, not even void. So simple आप return type कोई भी लिखते ही नहीं है हम के केस में. So this is the third feature of a constructor. Constructors may not be static and virtual. So these are two more properties of a constructor. Constructor cannot be static, constructors cannot be virtual. Now ये जब हम virtual पढ़ेंगे आगे, it will be later in the subject. So then we will discuss about that. So for now you should know कि constructors ना तो static define हो सकते हैं, ना ही virtual define हो सकते हैं. And the constructor should be declared in the public section. Constructors have to be the public section, क्योंकि इसे constructor कब call होते हैं? Whenever an object of a class is created. ठीक है. तो
अगर आप उसको पब्लिक सेक्शन की जगह प्राइवेट सेक्शन में लिख दोगे अगर कंस्ट्रक्टर को, तो प्राइवेट सेक्शन में जो भी चीजें होती हैं, दे कैन नॉट बी, दे आर नॉट एक्सेसिबल आउटसाइड द क्लास. और ऑब्जेक्ट क्रिएट कहाँ है? मेन फंक्शन के अंदर, एंड मेन इज आउटसाइड द क्लास. तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है? मेन से कॉल हो रहा है, मेन फंक्शन से. अगर आप कंस्ट्रक्टर फंक्शन को प्राइवेट सेक्शन में डिफाइन करोगे तो वो फंक्शन सिर्फ और सिर्फ क्लास के अंदर से कॉल हो पाएगा, एंड देन उसका कोई यूज नहीं होगा. सो द फंक्शन शुड ऑलवेज बी डिफाइंड इन द पब्लिक सेक्शन. Now, so these are the complete features या characteristics of a constructor. So like if you are asked a short question, a 5-marker question में आ जाता है, define constructors along with its features या characteristics. So first you have to tell what is a constructor, and then you have to list down the characteristics या features of a constructor. So you will say कि a constructor is a special type of member function of a class which is used to initialize an object of a class, and such functions are called automatically. They need not be called. A constructor function need not be called. It is called automatically whenever an object of a class is created. It has to be defined in the public section. Then the name of the constructor should be same as the name of the class, and the constructor function cannot be static. The constructor function cannot be virtual. So these are the various characteristics or features of a constructor. Now similarly there is a destructor. Destructor क्या होता है? जैसे ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है. सिमिलरली देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास which is called whenever an object of a class goes out of scope, या you can say it is about to be destroyed. तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जाने वाला है, मतलब वो एंड होने वाला है, खत्म होने वाला है, तो देन द डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड. तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन में आप एक्चुअली वो कोड लिख सकते हो. दैट पीस ऑफ कोड कैन बी रिटन इन अ constructor which you want to be called whenever an object of a class is about to end या about to destroy. तो वो कोड आप लिख सकते हो एक डिस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर. ठीक है. Now we'll see an example how to write the constructors and destructors of a class. So we'll take the same example like कॉम्प्लेक्स नंबर का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटन दैट. नाउ कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं आपके, कंस्ट्रक्टर्स आर ऑफ 3 टाइप्स. टाइप्स ऑफ constructors. Constructors are of 3 types. Number 1 is your default constructor. Yeah, you can also call a constructor without arguments. Then the second type of constructor is with arguments या पैरामीटर्स भी बोल सकते हो आप. कंस्ट्रक्टर विथ आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स. एंड द थर्ड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज कॉपी कंस्ट्रक्टर. So these are the 3 types of constructors. We will learn all 3 of them. किसका क्या काम है, कब कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज में आता है. Now suppose I want to initialize an object, say like this. I've done this. Now अगर बहुत तरह से ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकता है, he can write complex C1. बस सीधा इतना लिख दिया.
कोई हमने वैल्यूज पास नहीं करी, ना रियल के लिए ना इमेजिनरी के लिए। तो अपने आप से कंस्ट्रक्टर रियल मतलब इस ऑब्जेक्ट को किससे इनिशियलाइज करेगा? So in this case, what should happen when you are not giving any value for the real part and the imaginary part? What actually should happen? आपका real and imaginary both value should be set to 0. तो जब कोई हम पैरामीटर नहीं पास करते हैं, कोई वैल्यू नहीं देते हैं as a user, then the value should be assumed as 0. So this is the case of default constructor. In this case, the default constructor will be called. ठीक है, उसकी कोडिंग अभी हम बाद में देखेंगे। जब भी अगर यूजर ऐसी लाइन लिखता है तो द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, जो भी डेटा मेंबर्स हैं उनको 0 से इनिशियलाइज कर देगा। दैट्स इट। ठीक है, तो कम से कम गार्बेज वैल्यू नहीं प्रिंट, एटलीस्ट आवर ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज। सो इवन इफ वी फॉरगेट टू कॉल द गेट डेटा फंक्शन एंड डायरेक्टली अगर हम इसके जस्ट बाद शो डेटा फंक्शन को कॉल कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर लिखने के बाद, सपोज मैं लिख देती हूँ c1 डॉट शो डेटा। नाउ earlier what was happening when we had not written the constructor, तब क्या हो रहा था, ये show data function आपका garbage value print कर रहा था, but in this case garbage value ना print करके it will simply print 0. So 0 is better than a garbage value. इससे हमें पता चल रहा है कि the object c1 is initialized to 0. So the real part is also 0 and the imaginary part is also 0. Now यूजर इस तरह से लिखे से कॉम्प्लेक्स C1 या C2 ब्रैकेट में 5,3. नाउ व्हाट इज द यूजर ट्राइंग टू से? अब यहाँ पे दूसरा जो कंस्ट्रक्टर है दैट इज कंस्ट्रक्टर विथ आर्ग्यूमेंट्स, दैट विल बी कॉल्ड। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ initializing the object by 0 values, आप क्या कर रहे हो, you are passing the value for the real part and the imaginary part of the complex object. मतलब आप चाहते हो कि जो ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किया है C2, उसका रियल पार्ट, सपोज दिस इज C2, the real part should set to 5 and the imaginary part should set to 3. तो हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय I'll write complex C2 and within brackets I will pass the value of the real and the imaginary part in order. तो हमने पहले 5 दिया और 3 दिया, तो 5 will be stored in the real part of the object and 3 will be stored in the imaginary part of the object. अगर इसके जस्ट बाद में C2 डॉट शो डेटा करती हूँ तो आपका जो आउटपुट आएगा that will be, it will print 5 plus I3. So no garbage value. The object C2 will be initialized to 5 in the real part and 3 in the imaginary part. तो आपको समझ आ रहा होगा कि कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, किसी ऑब्जेक्ट को एक इनिशियल वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है. So we have seen two ways in which a programmer can initialize an object. एक समय तो क्या कर सकता है, बस लिख दिया complex C1, ऑब्जेक्ट का नाम लिख दिया बस. I have not supplied any value to it. तो अपने आप से कंपाइलर क्या करे, उसको क्या वैल्यू प्रोवाइड करे. सो इन दैट केस दिस इज नोन एज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, एंड यूजुअली द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स इनिशियलाइज द डेटा मेंबर्स विद अ 0 वैल्यू. इंस्टेड ऑफ सेटिंग सम अदर वैल्यू, दे नॉर्मली सेट द वैल्यू टू 0. द सेकंड कंस्ट्रक्टर वी हैव रिटन इज द कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स. सो हियर while creating an object we are passing 2 parameters. Here in this case we are just passing 2 parameters क्योंकि से हमारे क्लास में 2 ही डेटा मेंबर्स थे, real and imaginary. ठीक है, so the first value will be set into the real say data member and 3 in imaginary. तो आपका object initialize हो जाएगा with 5 and 3. Now at times a user may create an object like this. Suppose आपने लिखा complex C3 is equal to C1. Now what am I trying to do here? मैं यहाँ पे क्या करना चाह रही हूँ कि एक नया ऑब्जेक्ट बना रही हूँ मैं C3
and I want to give it an initial value same as C1. मतलब मैं एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रही हूँ C3 जिसमें एग्जैक्टली वो ही वैल्यू हो जो C1 में है, ठीक है। तो C1 में हमारी क्या वैल्यू थी 0 0, सो द सेम वैल्यूज दैट इज देयर इन C1 should be copied into C3. So in this case the copy constructor is called copy constructor. तो हमें सारे केसेस बना के चलने पड़ेंगे बिकॉज यू नेवर नो कि प्रोग्रामर किस तरह से आपका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करता है या इनिशियलाइज करता है. सो वी हैव टू राइट ऑल द 3 टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर्स इन द क्लास सो दैट यूजर या प्रोग्रामर किसी भी तरह से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करे उसके लिए एक रेलेवेंट कंस्ट्रक्टर फंक्शन होना चाहिए. Now this can also be written as, suppose I write complex say C4 और ब्रैकेट में मैंने लिख दिया C2. Now in this case also the copy constructor will be called. इसमें हम क्या कहना चाह रहे हैं कि एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ C4, so a new object C4 will be created, उसको मेमोरी अलॉट हो जाएगी and the C2 object values will be copied to C4. तो C2 में क्या values हैं आपकी 5 and 3. So the same values that are there in the C2 object will be copied in C4 object. So the C4 object will also have the value 5 plus 3i. So in this case, the third type of constructor, that is the copy constructor, is called. So this is the copy constructor. This is your constructor with arguments, and this is your default constructor. So normally जब भी हम क्लास बनाते हैं तो get data function अपना काम करता है. It gets the values from the user. ठीक है, वो लिखना भी जरूरी है क्योंकि से ये तो डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर रहा है. अगर यूजर चाहता है कि अपनी तरफ से कोई वैल्यू इनपुट कराना है, then the get data function should be called. So there should be a get data function in the class. Show data function अपना काम कर रहा है. It is displaying complex number in its required format. And इसके अलावा हम क्या करेंगे, उसी सेम क्लास में हम 3 कंस्ट्रक्टर फंक्शन बना देंगे. एक तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जिससे कि कभी भी अगर यूजर इस टाइप से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करे तो आपका ऑब्जेक्ट शुड बी इनिशियलाइज्ड विद 0. इट शुड नॉट अज्यूम एनी गार्बेज वैल्यू. अगर यूजर इस तरह से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करे तो इन दिस केस द कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स शुड बी कॉल्ड and whatever values you are giving within the parentheses should be initialized in the data members of the class. And the third case, you want to copy the value of one object into another while declaring. हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं C3 और उसी समय उसमें किसकी वैल्यू कॉपी कर दे रहे हैं C1 की. सो आई एम ट्राइंग टू कॉपी द वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट C1 into C3. या इस केस में व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम कॉपीइंग द वैल्यू ऑफ C2 into C4. सो इन बोथ द केसेस द कॉपी कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड. तो हर में आप तीनों तरह के कंस्ट्रक्टर बनाओगे जिससे कि यूजर किसी भी तरह से अपने से ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करे. तीनों ही केसेस के लिए एक रेलेवेंट कंस्ट्रक्टर चाहिए which will be called automatically whenever the object of the class is created. So now we'll just write the 3 constructors for the complex class only. तो अब आपको क्या करना है, जो आपने complex class का भी प्रोग्राम बनाया है उसी प्रोग्राम में आप ये कंस्ट्रक्टर फंक्शंस को ऐड कर दोगे. Now you will not create a program again and again. So that's why I told you many times in the earlier classes कि जो complex class है उसको आप एक बार लिख करके सेव करके रख लो, because all the coming topics in coming chapters जो भी concept हम सीखेंगे maximum time we will implement those things on the complex class because it is a good example and उसमें सारी चीजें हम implement करके easily दिखा सकते हैं. So we'll write the 3 constructors for the complex class, and similarly on the same pattern we can write
the constructor for any classes we have created till now. It can be a distance class, it can be a time class, it can be the student class, or it can be the employee class, any class. हर क्लास के लिए हम कंस्ट्रक्टर बना सकते हैं और कंस्ट्रक्टर का काम वही रहेगा to initialize the object of a class. So we'll take an example of the complex class. So I'll not write the complete code. The part that we have already written, I'll just skip. So class complex. इसमें प्राइवेट सेक्शन में बस हमने क्या किया था, फ्लोट से रियल कॉमा इमेजिनरी, एंड देन उसके बाद हमने क्या किया था, पब्लिक सेक्शन में we had written one get data function. So I'll just write the name of the function and I'm assuming हम ये सब कर चुके हैं. So you'll write the code here whatever is written. Similarly एक हमारा show data function बनाया हुआ था हमने, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके फॉर्मेट में प्रिंट कर रहे थे. ठीक है. नाउ आई टोल्ड यू, अभी फीचर्स जब हम पढ़ रहे थे कॉम्प्लेक्स क्लास कंस्ट्रक्टर्स के बारे में जब हम पढ़ रहे थे फीचर्स, so I told you कि constructors are always defined in the public section. They are never defined in the private section. क्योंकि private section में आप constructor को define कर दोगे तो उनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Because constructors call कहाँ से होते हैं? Main is a place that is outside the class. So whenever you want to call something from main function, you want to use something from the main function, that thing has to be written in the public section. तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखती हूँ, I will write the default constructor. Okay, I'm just writing a comment here so that you can know कि ये एक default constructor का कोड है. Now as I told you, now remember what features we discussed. Constructor का नाम क्या होता है? क्लास के नाम जैसा ही होता है. So function का नाम क्या होगा? Nothing other than complex. ठीक है, फंक्शन का नाम कॉम्प्लेक्स होगा. अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है? विदाउट आर्ग्यूमेंट्स. इसको मैंने ये भी कहा था ना, विदाउट पैरामीटर्स या विदाउट आर्ग्यूमेंट्स कंस्ट्रक्टर भी होता है. तो यहाँ पे हमारा कुछ भी नहीं होगा, कोई आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हम पास नहीं कर रहे हैं. एंड एक फीचर हमने पढ़ा था कि अ कंस्ट्रक्टर डज नॉट रिटर्न एनीथिंग, नॉट इवन वॉइड. तो यहाँ पे नॉर्मली या तो इंटीजर रिटर्न टाइप होता है, और अगर कोई फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करता है तो एटलीस्ट हम वॉइड लिखते हैं. ठीक है, तो यहाँ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे. कंस्ट्रक्टर फंक्शन विल नॉट return anything, not even void. So this part will be blank. ठीक है. अब यहाँ पे हम इसका कोड लिख देते हैं कॉम्प्लेक्स क्लास का. अब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या बताया था, कोई वैल्यू यूजर ने बताई ही नहीं किससे इनिशियलाइज कर. वी कांट पुट एनी वैल्यू रैंडमली से डेटा मेंबर्स. तो हम क्या करेंगे, इट्स बेटर दैट वी से रियल इज इक्वल टू इमेजिनरी इज इक्वल टू 0. मैंने क्या किया, रियल और इमेजिनरी दोनों को 0 कर दिया. ठीक है. सो ऑब्जेक्ट विल बी इनिशियल. नाउ वी विल राइट द सेकंड कंस्ट्रक्टर, दैट इज कंस्ट्रक्टर विथ पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स. द सेकंड टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर. अगेन वी आर राइटिंग इट फॉर द सेम कॉम्प्लेक्स क्लास. सो नाउ अगेन द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर विल बी व्हाट? कॉम्प्लेक्स ही रहेगा कंस्ट्रक्टर का नाम. कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास भी सेम कॉम्प्लेक्स, बट इसका रिटर्न टाइप भी नहीं होगा, जैसा कि होता ही नहीं है, कोई भी कंस्ट्रक्टर का रिटर्न टाइप नहीं होता है. बट दिस टाइम इट विल फ्रेम द कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर्स. नाउ कितने पैरामीटर पास करोगे आप कंस्ट्रक्टर को? जितने डेटा मेंबर्स होंगे आपके क्लास में. नाउ कॉम्प्लेक्स क्लास में हाउ मेनी डेटा मेंबर्स वी हैव? रियल एंड इमेजिनरी. तो सपोज मैंने यहाँ पे मैंने नाम इसलिए ऐसे लिए आर फॉर रियल. दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स दैट विल बी पास्ड as parameters to this constructor. अब यहाँ करना है, डिफॉल्ट में तो हमने क्या कर दिया था, रियल को कर दिया था, इमेजिनरी को भी 0 कर दिया था. क्यों? क्योंकि इसे यूज गिविंग द वैल्यूज ऑफ द रियल पार्ट एंड द इमेजिनरी पार्ट. सो व्हाट वी विल से, रियल इज इक्वल टू आर एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू आई. जो भी यूजर ने वैल्यू बोली तो वो वैल्यू रियल और इमेजिनरी में कर दी. ठीक है. नाउ ये वाला फंक्शन अगर हमारा कॉल होगा, सपोज यहाँ पे हम लिख लेते हैं मेन. मेन में हमारा जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, से आई रिटन कॉम्प्लेक्स, तो पहला वाला कंस्ट्रक्टर आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा एंड इट विल, दिस फंक्शन विल बी कॉल्ड एंड इट विल इमीडिएटली आफ्टर दिस आई राइट c1 डॉट शो डेटा. हमारा आउटपुट क्या आएगा? 0.
क्योंकि इसे रियल पार्ट भी 0 है, इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। कंस्ट्रक्टर कब कॉल होगा? 5,3। जब हम ये लाइन लिखेंगे तो हमारा सेकेंड टाइप का कंस्ट्रक्टर दैट इज कॉल्ड, एंड the real part will be set to 5 and the imaginary part will be set to 3. तो अगर हम इसके बाद c2 dot show data लिखते हैं i3, this will be the output. ठीक है, now we are left constructor. कॉपी कंस्ट्रक्टर में क्या होता है, पूरा का पूरा एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में, तो उसके जो इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स हैं, डेटा मेंबर्स हैं, वो दूसरे ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स में एज इट इज कॉपी हो जाएंगे। ठीक है, अब इस कंस्ट्रक्टर का नाम भी क्या रहेगा? कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा, हियर वी आर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ से फंक्शन ओवरलोडिंग। स्टार्टिंग में काफी पहले हमने पढ़ा था फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब है कि एक ही नाम से कई सारे फंक्शंस डिफाइन करना। सी में दिस वाज नॉट अलाउड, बट so you in a class you can have a function, you can have more than one function with the same name. Complex the constructor is the best example for this. हमने एक ही क्लास में 3 फंक्शंस बनाए कॉम्प्लेक्स नाम के। this is possible, but as we have फंक्शन ओवरलोडिंग, उनके पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स का जो नंबर है या उनका जो आर्ग्यूमेंट्स का टाइप है दैट शुड वेरी। तो इस कॉम्प्लेक्स फंक्शन में हमारा कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा है, तो ये एक अलग फंक्शन है। इसमें 2 पैरामीटर पास हो रहे हैं फ्लोट टाइप के, दिस इज अनदर से फंक्शन। एंड थर्ड जो फंक्शन हम बनाएंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर, इसमें हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेजेंगे, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट पास होगा और सेम ऑब्जेक्ट की कॉपी आप दूसरे ऑब्जेक्ट में सेव कर दोगे। तो अब यहाँ पे आप क्या लिखोगे, रियल इज इक्वल टू सी डॉट रियल एंड इमेजिनरी इज इक्वल टू सी डॉट इमेजिनरी। ठीक है, दैट्स इट। अब ये ऑब्जेक्ट कैसे कॉल होगा, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा कॉम्प्लेक्स से C3 C1, तो क्या होगा, इस केस में आपका कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड C1 विल बी पास्ड, C1 का रेफरेंस पास होगा। अब हमने कॉल बाय रेफरेंस एंड कॉल बाय वैल्यू पढ़ा था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज बीइंग पास्ड एज रेफरेंस C में आ रहा है, और आप फिर क्या कर रहे हो, C का रियल, अब C1 के रियल में क्या है 0 और इमेजिनरी में भी 0, तो ये क्या करेगा, C का रियल वैल्यू को रियल में डाल देगा और C के इमेजिनरी को इमेजिनरी में डाल देगा। ना ये रियल और इमेजिनरी किसकी बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट C3। विच ऑब्जेक्ट आर वी क्रिएटिंग, C3। तो C3 के रियल में C का रियल आएगा, जो कि एक्चुअली क्या है, इसमें आ क्या रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, C1 का रेफरेंस आ रहा है। तो आप C बोलो या C1 बोलो, इट्स वन एंड द सेम थिंग। तो C1 का रियल पार्ट विल बी मूव्ड इनटू C3 का रियल पार्ट एंड C3 का इमेजिनरी, C1 का रियल इमेजिनरी पार्ट विल बी कॉपीड। अगर हम C3 डॉट शो डेटा लिखेंगे तो क्या आउटपुट आपको मिलेगा, ये भी 0 वैल्यू प्रिंट करेगा, क्योंकि इसे C3 में क्या असाइन है, सेम वैल्यू एज C1। So C3 will also be initialized, C3 object will also be initialized to 0. Now another way of writing this was, हम लिखते हैं complex से C4 ब्रैकेट में C2 का रेफरेंस आएगा C में, तो C2 की वैल्यूज will be copied into C4 and जब हम C4 को प्रिंट करेंगे तो the same values will be printed that are there in C2. So this is the copy complex class. We have written the default constructor that is without any parameters. उसका काम क्या है, सारे डेटा मेंबर इनिशियलाइज करना। Then we wrote the constructor with parameters. उसमें हमने क्या किया, जो भी यूजर ने वैल्यू प्रोवाइड की थी ऑब्जेक्ट को उससे इनिशियलाइज कर देते हैं। एंड थर्ड केस में इट्स द कॉपी कंस्ट्रक्टर, उसमें क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू एज इट इज will be copied into another object while the object is being created. So these are the 3 types of constructors and we've written all the 3 constructors for the complex class. उनको जब हम यूज करेंगे, जब मेन फंक्शन में हम बिना गेट डेटा फंक्शन कॉल कराए ऑब्जेक्ट्स को शो करेंगे, the best part will be कि now no garbage values will be printed. अगर जब तक हमने कंस्ट्रक्टर्स नहीं पढ़ा था, जब तक हमने क्लास के कंस्ट्रक्टर्स नहीं डिफाइन किए थे, तो अगर मैं गेट डेटा फंक्शन के को कॉल किए बिना शो डेटा फंक्शन को अगर कॉल कराऊंगी, सो द ऑब्जेक्ट विल डिस्प्ले द गार्बेज वैल्यूज। बट आफ्टर राइटिंग द कंस्ट्रक्टर्स दिस थिंग इज श्योर कि आपका ऑब्जेक्ट में कभी भी गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी।
it will have some meaningful value, either a zero value or whatever the user has initialized the object with. So this was something about constructor. तो आज हमने पढ़ा constructor क्या होता है. Now this is a very important topic. छोटा सा chapter है लेकिन पूरा chapter important है. Constructor क्या होता है? You should know how to define a constructor. What are the characteristics or features of a constructor? Then we learned about the three types of constructors, the types of constructors. So we learned the three types of constructors. The first was default, the second was with parameters, and the third was copy constructor. ठीक है? And last में हमने ये तीनों constructors को हमारी complex class के ऊपर implement किया. ठीक है? Now, what you have to do now is आपने assignment में जो question आपको दिए गए थे, there was one question on distance class and there was one question on time class. Okay, and there was one question on say that calculator also. तो assignment के सारे questions पे आपको constructors भी implement करना है. All three type of constructors you have to implement in all the four questions. तो आपको time class में भी तीनों constructor define करने हैं, distance class में भी तीनों constructor define करने हैं, and जो calculator वाला program है उसमें भी आपको सारे constructors define करने हैं. And the last was complex class only, so that I have just taken as example. So you can do that also. Okay, so I'll just end up the topic here, and next class may we'll see one or two more examples on constructors, and then then we learn about destructors, and that is all in this chapter. It's an important chapter. At the same time, पर बहुत ज़्यादा इसमें नहीं है contents. So you should only know the constructors and destructors, उनके characteristics, and how to write the constructors for a class. कोई भी class आपको given हो, आप उसके constructors लिख सको. So exam में कई बार आ जाता है, एक तो theory question आ जाता है, what are constructors, brief types. तो आपको constructor और उसके types explain करने हैं, या फिर constructor और उसके characteristics explain करने हैं, या फिर आपको बोला जाएगा कि आप constructors explain करो and with a suitable example define all the three constructors for the class. So you can assume any example. So I'll suggest you can use this complex class example only because that's a standard example. Usually सारे books में यही example refer होता है. You can use another examples also, but this also you can do. So I'll just end the class here.